So here we are going to talk about a fluid mosaic model which is able to explain what exactly the structure of plasma membrane, how exactly it looks like. So whenever we study about the physiological and biological properties of plasma membrane, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो बहुत सारे मॉडल्स हैं which explains how exactly the plasma membrane look like, but here there was a model, that is fluid mosaic model, which was given by the scientists, that is Singer and Nicholson. और ये जो मॉडल है it is widely accepted model because it is the one which is very much able to explain how exactly the properties of plasma membrane are present. So if you see, according to the Singer and Nicholson model, the membrane it is a kind of a quasi fluid. So जहाँ पर जो lipid है it is forming a viscous two dimensional solvent, लेकिन जो proteins है the proteins are inserted and integrated more or less deeply. So here you can see the proteins and you can see the lipids which is forming a viscous two-dimensional solvent. So the most abundant component which is present in the plasma membrane is the phospholipid. So you can see the phospholipid it consists of the head and phospholipid it consists of the tail. So ये एक layer है और ये दूसरी layer है. So इस तरीके से जो है the two layer of the phospholipid it is present. You can see the one layer and this is the second layer. So इस तरीके से bilayer जो है form होगा, that is of the lipid. So ये जो phospholipid है it is an amphipathic molecule, because if we see the head region, this is the head region which is hydrophilic, मतलब it is water loving और ये हमेशा water के side present होगा, and the tail it is hydrophobic. So जो tail है it is having a phobia with the water, so we call hydrophobic. So it is always towards the inside. So you can see ये plasma membrane है, इस side भी water present होगा, उसी के side ही hydrophilic region head है, or internal side भी, here is going to be the cytoplasm, inside there is going to be water. So again the head it is always towards the region that is water region. So the plasma membrane it forms a stable barrier between the inside and outside aqueous phase of the cell. So whenever we talk about a cell, whenever we study a cell, तो ये जो है, here suppose this is the cell. So ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी water present होगा, and here inside the cytoplasm also there is going to be water. So इस तरीके से जो है head it is always towards the exposed water region, and again the head it is always towards the cytoplasm, that is the water region. So इस तरीके से जो एक stable membrane है, और you can say it is a barrier between inside and outside aqueous phase of the cell. In this phospholipid, the proteins are seen to float. So you can see how the proteins they are floating. Proteins they float like the iceberg which is present in the sea. So most of the plasma membrane it contains the lipid and also the protein. So ये major component है जो कि plasma membrane में नजर आएंगे. Here you can also see the carbohydrate which is also present in the small amount. So phospholipid जो है which forms the bilayer, there are five major types of phospholipid: phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine, sphingomyelin, phosphatidylinositol. And here if we concentrate cholesterol and sphingolipid when they are in clusters and in the small semi-solid patches of highly organized structure, we call them, these are called as lipid raft. Further, there are two classes of protein. हम देखते हैं कि दो classes हैं proteins के. पहला आता है peripheral protein, दूसरा आता है integral protein. So first we'll talk about the peripheral protein. Peripheral protein जो है they are always present at the periphery region, बाहरी side ही present होंगे, और वो आसानी से dissociate हो जाते हैं from the phospholipid bilayer very easily. They are always attached to the phospholipid bilayer by a kind of a protein protein interaction, और वह उसको ट्रीट किया जाता है पोलर रीजन से, तो वो आसानी से रिमूव हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं फ्रॉम द मेम्ब्रेन विदाउट एनी डैमेज टू द फॉस्फोलिपिड. सो कुछ एग्जांपल्स हैं पेरिफेरल प्रोटीन के, लाइक द स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, एक्टिन,
अब हम बात करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स के। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है दे हैव वन और मोर सेगमेंट्स which are embedded in the phospholipid. You can see how internally both the both the phospholipid bilayer के internal से ये embedded होंगे. It फॉर रिमूविंग द इंटीग्रल प्रोटीन तो नेसेसरी हो गई है फॉस्फोलिपिड को ब्रेक करना, फॉस्फोलिपिड को डैमेज करना पड़ेगा, तभी ये इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो रिमूव हो पाएंगे. और ज्यादातर इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. यू कैन सी हाउ द प्रोटीन दे आर प्रेजेंट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड. सो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन. कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक द ग्लाइकोफोरिन, बैंड 3 एंड द पोरिन्स. Carbohydrates जो होते हैं, carbohydrate they also form a kind of a small portion which is present in the form of glycoprotein, glycolipid. Lipid के साथ you can see the carbohydrate, here also protein के साथ you can see the carbohydrate. So carbohydrate भी present है in the form of glycoproteins and the glycolipids. Glycolipids जो हैं they are exposed always towards the outer surface of the plasma membrane. और कार्बोहाइड्रेट जो है इस तरीके से आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे. सो दे फॉर्म अ लेयर दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. इट इज फॉर्म्ड बाय द ओलिगोसैकेराइड. इफ देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ये ओलिगोसैकेराइड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स. एंड ऑल्सो द ट्रांस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. Further, we'll talk about how exactly the structure and functional features of fluid mosaic model look like. पहला structure and functional feature है that is mosaic nature and fluidity of membrane. So mosaic nature explain क्या करता है, ये जो membrane है इसमें एक unique बहुत ही अलग तरीके का composition present है, where proteins जो हैं they are shown at the plane of cleavage of lipid bilayer. lipid bilayer के ही बीच बीच में जो है आपको proteins नजर आएंगे. Here कुछ fluidity of membrane है which is contributed by unique motion properties of lipid bilayer. So कुछ motions हैं of the lipid bilayer that is of different types like flexon, lateral diffusion, flip flop motion and the rotation. So यहाँ पर if we see this is a lipid layer, okay, suppose ये जो है this is a lipid layer, okay, ये head है ये tail है. अगर ये इस तरीके से rotate कर रहा है एक ही जगह पे, so this movement is called as rotation. यहाँ पर अगर सपोज ये लिपिड है, here this is the head and this is the tail, अगर ये इस जगह से मूव होके दूसरी जगह मूव हो जाता है, so this is called as lateral movement. अगर यहाँ पर जो लिपिड है वन साइड और द अदर साइड मूव हो रहा है जस्ट एडजेसेंट टू इट, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन. और यहाँ पर इफ द हेड प्रेजेंट ओवर हियर एंड द टेल इज ओवर हियर और ये तुरंत फ्लिप फ्लॉप हो जाता है नीचे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप flop movement of the lipid. So these are kind of a movement. अब दूसरी हम बात करते हैं that is integral proteins bind asymmetrically to the lipid bilayer. So ये जो layer होगी this is called as lipid bilayer और बीच में ही आपको integral proteins नजर आते हैं. और ये सारे के सारे integral proteins you can see how asymmetrically they are present. So जितने भी integral protein हैं इनका कोई they have a particular specific orientation with respect to the cytosolic and the exoplasmic phases of the membrane. So कुछ ऐसे molecules भी हैं जो कि particular integral membrane protein शो करते हैं, जैसे ग्लाइकोफोरिन वो दोनों ही डायरेक्शन में similar size में ही present होंगे. So this absolute asymmetry in proteins orientation give the two membrane faces that different characteristics, exo or the cytoplasmic phase. In contrast to the phospholipid proteins, they have never been observed to flip-flop across a membrane because such movement would be unfavorable from energy consideration. So it is said कि जो flip-flop movement जो है lipid का वो कम ही नजर आता है, otherwise it is going to affect the energy consideration. Now we will talk about the semi-permeability of the plasma membrane. Semi-permeable membrane इस plasma membrane को इसलिए बोलते हैं क्योंकि only selective things only can enter inside the cell by the plasma membrane. So ये जो plasma membrane है, so it regulates the entry and exit of material. एक passage की तरह काम करेगा जो कि किसी किसी molecules के लिए restricted होगा. इसका मतलब है only selective चीजें ही enter कर सकती हैं. This is a property of the membrane. So इस तरीके से
सेवरल प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू विच इज एबल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलती है. Now, if we talk about the lipid solubility, अगर सपोज कोई लिपिड का बना हुआ मॉलिक्यूल है तो वो आसानी से लिपिड बाइलेयर के थ्रू इनसाइड ऑफ द सेल एंटर कर सकता है, क्योंकि ये जो लिपिड है वो भी, ये जो लिपिड बाइलेयर है वो भी लिपिड की बनी हुई है. और अगर कोई लिपिड मॉलिक्यूल है सो इट कैन ऑल्सो एंटर फ्रॉम दिस लिपिड बाइलेयर, क्योंकि लिपिड लिपिड को एंट्री दिला सकता है. लेकिन अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर, तो वो लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल से एंटर नहीं हो सकता. सो जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दे कैन इजीली पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इवन अगर कोई बहुत छोटे साइज मॉलिक्यूल्स हैं, कोई अनचार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो भी इसी लिपिड बाइलेयर के थ्रू एंटर कर सकता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द चार्ज. हमेशा सेल के अंदर जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और सेल के बाहर जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है. सो इसलिए हम बोलते हैं जो लिपिड बाइलेयर है इट इज इम्परमिएबल टू ऑल चार्ज मॉलिक्यूल आयन. कोई चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई चार्ज आयंस है तो वो आसानी से सेल के अंदर या सेल के बाहर एग्जिट नहीं हो पाते. ओनली कुछ ही चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पास हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन से. कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सम पोर्स और बाय द हेल्प ऑफ सम चैनल्स, या तो फिर कोई ट्रांसपोर्टर की मदद से ही. ऐसा डायरेक्टली लिपिड के थ्रू वो एंटर नहीं कर सकते. सो यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कुछ नजर आएंगे स्ट्रक्चर्स लाइक देयर कुड बी सम चैनल्स, there could be some porins, or there could be some transporters also, due to which the ions they are going to get enter inside the cell. So अगर suppose cell के अंदर negative charge present है तो इस तरीके से जो inflow होगा, there could be inflow of the positive ions through these channels, or there is going to be hinder for the inflow of the anions, क्योंकि anions जो होते हैं वो negative charge होते हैं और जो cations होते हैं वो positive charge होते हैं. As we know the positive attracts the negative, that is why अंदर side negative charge होने के कारण here there is entry of the cations. There could be entry of the cations because cations they are of positive charge molecules. So through the transporters they can enter inside the cell. अब हम बात करेंगे कुछ channels की, कुछ transporters की. Okay, so जो proteins हैं which is present on the membrane, they are the one which is helping the substances to move in and to move out of the cell. So बाकी proteins जो हैं they are acting as a transporters, that is they pick up substances on one side of the membrane और उसको release कर देते हैं, shuttle it through the other side before releasing it. So most channels and transporters they are very selective. ऐसा नहीं किसी भी molecule को entry दिला सके, no. ion channels होंगे वो सिर्फ ions की entry कराएंगे. So इस aquaporins होंगे जो कि सिर्फ water की entry कराएंगे. So ये कुछ channels हैं specific हैं, कुछ transporters हैं वो भी specific हैं. So selective ही चीजें ही enter होंगी, that is why they are very selective, allowing only selected solutes to cross the membrane. So इस तरीके से जो है this is how the structure of the plasma membrane was, and here the video ends, and thank you very much.